कारण आमचे जे गेस्ट आसा ते दिल्लीचे उर्जा मंत्री वीज मंत्री तांकां कोंकणी समजपाक एखाद्या डिफिकल्ट जातली आनी वायडर ऑडियन्सांक पावपा खातीर हो विशय पावपा खातीर ही डिबेट आमी घडोवन हाडटा. सो गुड आफ्टरनून. वी आर ब्रिंगींग टू यू दीस डिबेट फ्रॉम Institute Mises Braganza Hall in Panjim. This is a historic debate because it is for the first time that in the history that two power ministers of any state will argue, will discuss. We don't want them to clash, but to argue and discuss over one issue that is very close to everyone's heart, and that is power or electricity. So this is one debate that everyone is looking out for, has been waiting for in Goa and also outside Goa, and also those Goans who are living abroad, because this can also lead to many more debates. So welcome for this power debate. I'm Rupesh Samant, senior journalist, and I will be the moderator for the debate. My role here will be very limited. So before we call our guests here on the dais, I'd like to inform that we have designed this debate with 2 minutes answer from each of the side, and there will be a discussion on that. And both camps have agreed for the same. We have discussed this with both the camps, and they have agreed for this sort of debate. And I can assure you that none of the questions for this debate are shared with the guests. So guests don't know what we are going to ask them. So this debate is aired through various media channels, live channels, and it is seen by more than 10 lakh people right now across Goa and also outside Goa. So I welcome each and everyone who is watching this debate on their television set, on their mobile set, and also I welcome my media friends here. Due to COVID protocols, we have maintained that this debate will be limited only for media. So we have invited only media here. And after the debate, we have 20-minute session for media, so that media people can ask the questions. So let's start. Lot of people have been waiting for this debate, so let's going. I request first Goa Power Minister Nilesh Cabral to come on the stage. Being the host of the debate, as he said that I am hosting this debate, I am calling him first, and I also request Delhi Power Minister Satyendra Jain ji to come on the stage. Due to COVID protocols, we have ensured that they don't shake hands because shaking hands is not allowed in COVID. So they have greeted already each other down there with namaskar. So here we start, and before we start the debate, we are going to host this debate in English and Hindi, and I would request both the guests to avoid cross talking. And as I will be moderating, and we are planning to spend this debate across 40 to 45 minutes. Yeah. So first question, as we start the debate, the first question to you, sir. So आप बात कर रहे हैं दिल्ली मॉडल की, दिल्ली मॉडल वर्सेस गोवा मॉडल से ही डिबेट शुरू हुई है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द दिल्ली मॉडल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड व्हाट इज द मॉडल दैट यू आर प्रपोजिंग फॉर गोवा, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मॉडल, व्हाई एंड हाउ यू हैव कम टू दिस फिगर ऑफ 300 यूनिट्स? नमस्कार. सबसे पहले तो मैं दिल्ली का मॉडल बता दूं आपको. दिल्ली का मॉडल है 24/7, 24 घंटे बिजली. दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लगातार 24 घंटे बिजली आती है, अनइंटरप्टेड बिजली आती है. पहली चीज़, कोई पावर कट नहीं लगते हैं. दिल्ली के अंदर बिजली डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 200 यूनिट फ्री मिलती है और 400 तक को आधी रेट से मिलती है. हम जनता का पैसा जनता के ऊपर वापस लुटाते हैं. ये दिल्ली मॉडल है बिजली के लिए. गोवा का जो मॉडल है जनता के लिए उनका है पावर कट ज़्यादा, बिजली कम. जनता के लिए नहीं, नेताओं के लिए बिजली फ्री है. जो पैसा जनता के लिए बिजली पे खर्च करना चाहिए था वो एमएलए खरीदने पे खर्च किया जाता है. हमने गोवा के लिए, जो आप ही रुपेश जी ने क्वेश्चन पूछा, गोवा के लिए जो मॉडल है हमारा,
हमने गोवा के लोगों से बातचीत करके दिल्ली मॉडल को गोवा के लिए जो हमने बातचीत की कि भाई दिल्ली में हमारा ये मॉडल है, गोवा के लिए बिल्कुल अलग मॉडल है। गोवा के अंदर हम 300 यूनिट बिजली सबको फ्री देंगे। आपका क्वेश्चन था 300 पे कैसे पहुंचे। दिल्ली में हम 200 यूनिट फ्री देते हैं और 200 से 400 तक का आधा रेट देते हैं, यानी 300 यूनिट। तो समझाने के लिए बिल्कुल आसान था। गोवा में हमने लोगों से डिस्कशन किया, मीटिंग्स की, तो वो बोले कि भी 200 और 400 बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, आप सीधा सीधा 300 कर दीजिएगा, दैट इज बेटर। तो गोवा की जनता से बात करके हमने फैसला किया कि 300 यूनिट बिजली सभी डोमेस्टिक कस्टमर्स को, सभी कंज्यूमर्स को फ्री मिलेगी। 300 यूनिट से ऊपर, जितना भी 300 यूनिट से ऊपर होगा, जो रेट हैं वो वही रहेंगे। और दिल्ली में पिछले 7 साल से हमने बिजली के रेट बढ़ने नहीं दिए। आपको हम गारंटी देते हैं अगले आने वाले 5 साल तक गोवा के अंदर किसी भी स्लैब के बिजली के रेट बढ़ने नहीं देंगे। ये गोवा का मॉडल होगा। 24 घंटे 24/7 24 घंटे गोवा के अंदर बिजली आएगी। कट को आप भूल जाएंगे, जैसे दिल्ली के लोग भूल गए हैं। दिल्ली के अंदर इन्वर्टर, जनरेटर अब खत्म हो गए हैं। गोवा के अंदर भी इन्वर्टर, जनरेटर को आप भूल जाएंगे, जनरेटर की दुकानें बंद हो जाएंगी। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और किसानों के लिए बिजली मुफ्त होगी। ये गोवा का मॉडल। You have to respond for this. He is speaking about not only Delhi model. ते म्हणता की he is saying that uninterrupted and you are not making you are actually pushing all this money from this to buy MLAs. Hello. Anyhow, very good afternoon. And Is it working? Mic is working. hello. Yeah. What he said was some model which I think first he intends to give, and what he is giving in Delhi has got a difference. They have changed their models from the original model what they had told in Delhi itself to 2-3 times. So I don't know how many times they will change here. Originally they gave something and then now it has gone to a different model. I will just explain how the Delhi model, because people of Goa should also know the Delhi model and the Goa model which is existing. Let us talk what is existing in Goa and what is existing in Delhi. Now, when a person consumes 80 units in Goa and a person consumes in Delhi it is free. In Goa they pay 137 rupees. If somebody consumes in Delhi 120 units, in Delhi it is now, as per their scheme, it is free. In Goa it is 207 rupees. But somebody who is consuming 300 units, say 200 units, 201 units, in Delhi they have to pay 195 rupees, we have to pay 375 rupees. Then comes to 300 units, they have to pay, they have the total charges along with subsidy, they have to pay 1,521 minus the subsidy, that is 721. In Goa the bill is only 640. When it goes up to 400 units, you have to pay, in Delhi that is 2,052, where they subsidize and they still have to pay 1,252, whereas in Goa they have to pay 985. So this is a clear picture of the existing models which is there in Goa and which is there in Delhi. The second thing what he said, that Neta is free, means politicians are free. I pay my own bill. I don't know which free he is talking about. Maybe it is free for them. But in Goa, I pay my own bills. I have got receipts. Are ministers given free electricity? No, nobody is given free. Nobody is given free. So I pay my own bill. Even being a power minister, I pay my own bill. So the question No, it's not about just you, but are ministers being, given nobody free is given free electricity in Goa. Everybody has to pay their own electrical bills. It is even electricity department engineers, even if they are staying in their quarters, they have to pay their bills. So there is no question of free to anybody. That is second. 24/7 uninterrupted supply. See, that is what a comment he has passed on. Well, our geographical area is 2 times of Delhi. That is one. Secondly, I understand. I am not saying that we can give. We are trying to give 24/7, and we are sure that we will achieve. It is only during the season, that is this rainy season, that the interruption starts. And we don't have a Genco. Genco means generating station in Goa. We have to bring kilometers and kilometers away.
Whereas in Delhi, they have their own Gencos. They have got 2 or 3 Gencos in Delhi who produce power. Now, if their idea is to have a thermal power station here, I have no comments on that. They must be having an idea of making a thermal power station here to produce their own electricity here so that there are no disruptions. Our electricity comes kilometers and kilometers from Chhattisgarh. Some of the power supply comes even from Himachal Pradesh. Some of the power comes very far off. And so there are interruptions all the way through. And there is no doubt about it. But we are still trying to give maximum and benefit, in the sense we were trying to give 24/7, and we are working on that ratio. Okay, so before I go to him, because your 2 minutes are passed, before I go to him, I want to ask you a straight question. Is this possible for Goa to give free electricity? Yes or no? Uninterrupted electricity? If yes, then when? See, uninterrupted, yes. When? We are on a uninterrupted in the sense, see, you are aware of the issues. There are 2 grids which are coming to Goa. One single grid is not enough to give 24 hours. We are bringing the other grid. We have issues which will be settled, and the issues will come. Ultimately, giving at the distribution level stage, there are 2 types of interruptions. One is the distribution side, and one is the incoming side. Now, incoming side, the strengthening is kilometers away. It will take some time. But from the distribution side, we have already started working on that. And I can assure you, in the projected line, what works have started. Some of the works have started, some of them have been tendered, and some are in the pipeline. Within the 6 months, all will be tendered, and within the next 2-3 years, because it takes time for any excavation, because we don't have defined routes in Goa, where there are big roads like in Delhi. There are big carriageways and big roads where you can take. So we now defined roads, we are putting underground cablings, and over a period of next 3 years, we have planned everything. We will be able to give from our side distributions. Next 3 years, Goa will have uninterrupted power no free supply. power, boss. Okay, so There's no free power no given. free power. There's nothing coming free. See, I don't know how they can give free. Maybe because they are producing the power to thermal power or to their Gencos. That is they might be able Okay, to. I'll go to, how do you manage to give power free, and what is your reaction that they? नहीं, it's not possible? पहले तो मैं काबराल जी के जो बहाने इन्होंने रखे हैं उनका जवाब दे देता हूँ. ये एक्सक्यूजेज हैं, बहानेबाजी है. जैसे क्लास में बच्चा जाता है ना तो बहाने बनाने लगता है. दिल्ली के अंदर एक भी थर्मल पावर स्टेशन दिल्ली के अंदर काम नहीं कर रहा है. जैसे हमारी सरकार बनी थी, ड्यू टू पॉल्यूशन, राजघाट और हमारे पास बदरपुर पावर स्टेशन थे, दोनों हमने बंद करा दी थी. छत्तीसगढ़ जहां की बात कर रहे हैं, वहां से दिल्ली को बिजली भी आती है, हिमाचल से बिजली कहते हैं, दिल्ली को भी हिमाचल से बिजली आती है. जब भी हम 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देते हैं. नियत की बात है. अगर हमारी नियत होती, हमारी सरकार को तो 7 साल हुए बने हुए, हमने सरकार बनने के 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली स्टार्ट कर दी दिल्ली के अंदर अनइंटरप्टेड. इनकी सरकार तो 10 साल से चल रही है, 12 साल से चल रही है. इनको अब आगे 3 साल क्यों चाहिए? क्योंकि हमने कह दिया, तो अब ये कह रहे नहीं हमसे हुआ नहीं, 10 साल हमने ऐसे बर्बाद कर दिए, तब हम एमएलए खरीदने में लगे हुए थे, तब हमारे पास टाइम नहीं था, तब हम पॉलिटिक्स में लगे हुए थे. अब आने वाले 3 साल के अंदर एमएलए खरीदने के लिए अभी हम 3 साल में आने वाले 3 साल के अंदर he should be remitted to this soap. Then I will also ask him in between. Okay, no, There's no, okay. question what he has to say. This one question which he has asked you, and one statistics he has presented is that your Delhi power is costlier than Goa power. रुपेश जी, मैं उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ. नहीं, आप दिल्ली पावर के बारे में हाँ, दिल्ली की पावर बता रहा हूँ. उन्होंने बोला कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से पावर आती है, इसलिए बिजली 24 घंटे नहीं मिलती. दिल्ली में भी पावर छत्तीसगढ़ से आती है, दिल्ली में भी पावर हिमाचल से आती है. उसके बावजूद भी दिल्ली में पिछले 5 साल से 24 घंटे 24/7 बिजली मिलती है. हम कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे. हम ये नहीं कह रहे कि हमें 3 साल और दे दो. अब जनता समझदार है, वो 3 साल देने वाली नहीं है. ध्यान से रहना. How do you answer? देखिएगा, दिल्ली के अंदर 300 यूनिट, हमने कहा है कि गोवा में 300 यूनिट फ्री देंगे आपको. 300 यूनिट फ्री का मतलब जीरो. आज जितना भी मिल रहा है, अगर वो 700 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए, उसके बहस में पड़ते ही नहीं. 800 रुपए से जीरो तो बेटर है ही ना. आप सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछो कि जी आप फ्री देंगे या नहीं देंगे. अगर नहीं देंगे, जनता अपने आप फैसला कर लेगी. जनता को फैसला करना है ना कि उनको फ्री में बिजली चाहिए या नहीं चाहिए. और जहां तक अभी नीलेश बाब जी ने कहा कि इनको फ्री बिजली नहीं मिलती है, झूठ बोल रहे हैं. देखिएगा, सेक्शन 4 जो इनके एंटाइटलमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स को रेजिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. सेक्शन 4 का 1 लास्ट में लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर विच शैल बी पेड बाय द गवर्नमेंट. ये इन्हीं का पेपर मंगाया मैंने आज ही, इन्हीं का लिखा हुआ है. अगर इसको चैलेंज कर सकते हो तो बता दीजिएगा.
अगर नेता अगर मिनिस्टर्स को 5,000 यूनिट Sir, can I answer? Jain ji, yeah. See what he is talking about. See, he should now what he said. See, it is ministers को free मिलता है मतलब क्या है? What he is referring to, I don't know. That is one. तो आपको पढ़ के आना चाहिए। He must be referring to government accommodation. He's saying residence of ministers, each minister shall be entitled without residence any of payment. Ministers on the government accommodation where the ministers stay in the government accommodation. That is all over the country. The But question you is not earlier that- said you are not getting free. See, what he said, Neta को free मिलता है. Neta is who? Neta is MLAs. That is what it is. Neta is Now, minister also. Ministers, it may be ministers also. But people who are staying in the government accommodation, maybe that is what he is trying to say. No, but Which I just don't now know you what- gave an example, Neeraj Bab, saying that even if there is I don't stay in a government accommodation. No, not yours, No, but that's what I even said. a person who's working for electricity department pays for it. Correct. So we are having impression that everyone pays for it, but here it looks like ministers I don't know don't from have to what pay. he is referring to. I will see, but what I am trying to say, if there are government quarters given to a minister, it is the privileges of a particular privileges, which is given. So like that his ministers in Delhi are getting salaries of almost 3-4 lakh rupees. So that is not the issue. See, I said personally I don't have any bungalow, neither am I getting free electricity. When he says Netas free electricity means Netas means everybody who is at their home in their respective home. That is what I meant to clarify, and I am still clarifying. What he is saying is government quarters which the Netas are given, where there are elections. So they are privileged under the legislative act, not by the election department. So the question of we giving free is not done like that. He giving free means he is giving from his pockets. Okay, there he is is also one- making a provision of in his budget. And today in his budget, if he has made a provision, it is from some other taxpayers' money. So the question of what he is making a statement does not come right. How do you justify this allegation? Even in देखिएगा, past debates, he has said मैं- कि state is paying. Even if people are And not one more paying, thing- taxpayer is paying for that. देखिएगा, जो भी खर्चा होता है ना, सबसे पहले तो जनता को मैं क्लियर कर देता हूं कि ये पैसा नेताओं का नहीं है, टैक्स पेयर्स का है। कई बार नेताओं को लगने लगता है, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं कि हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। ये सारा का सारा पैसा आप ही ने खर्च किया है, आप ही की जेब से लिया जाता है। अगर बाजार में आप जाते हैं, अगर साबुन की एक टिक्की भी लेके आते हो ना, उस पर भी टैक्स लगता है। गरीब से गरीब आदमी छोटे से छोटा काम करता है, उस पर टैक्स लगता है, उस टैक्स से सारी किटी बनती है। उस पैसे को ठीक से मैनेज नहीं करते नेता लोग, और बाद में कहते हैं फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए। अभी वो कह रहे हैं नहीं, अगर सरकारी बंगला है तो मिलेगा, प्राइवेट में मैं नहीं ले रहा। भाई हो सकता है बड़े आदमी हो, आपके पास काफी पैसा हो, आप नहीं ले रहे हो, पर आपको एंटाइटलमेंट तो है। 5,000 यूनिट भी अगर बिजली मिलेगी ना, फ्री मिलेगी, जनता को 300 यूनिट दे दो तो उनको तकलीफ होती है। 300 यूनिट क्यों दे दें? अरे क्यों नहीं दे दें? उसी जनता ने कमा के दिया है। जिस जनता ने सारा पैसा इकट्ठा करके दिया है, उस पैसे को बर्बाद करने से अच्छा है कि जनता को वापस किया जाए। कौन बर्बाद करता है? Who is doing बर्बाद करने का ईशा I will prove to you when he is saying, I will show to you if what he is saying बर्बाद. Now I'll just give a bill of one. मुझे लगता है एक एक करके बोलें। टाटा रुपेश जी ने बोला था कि एक एक करके बोले, बीच में ना बोलें। ओके नहीं, ओके। बीच में नहीं बोलने का तो ठीक है, कब तक बीच में बोलने का नहीं, जब आप एलिगेशन करते रहे। आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। I will come to you, Nilesh Babu. In fact, okay. So finally, you agree that whatever subsidies, whatever free electricity that you will give, will be from the taxpayers. देखिएगा, So जनता का I am getting free electricity, but I am paying for that through some other sources. नो, देखिएगा जनता का ही No, पैसा है सारा, just जिससे ये गवर्नमेंट हाउसिंग भी मिल रही है ना, वो जनता का ही पैसा है। No, we are talking about electricity. इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात बता देता हूँ। देखो सरकार के पास क्या होता है, जो पैसा टैक्स में कलेक्ट किया, उस टैक्स कलेक्शन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली के अंदर हमने एक वजीरपुर में फ्लाईओवर बनाया, 247 करोड़ रुपए, 247 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट थी। उसको हमने समय से पहले, टाइम से पहले पूरा किया। 100 करोड़ रुपीस हमने बचा लिए। ये होता है ना सरकार का काम। 100 करोड़ बचे, उस पैसे से हमने जनता को वापस किया। अब ये कहते हैं नहीं 10 साल तक तो काम नहीं करेंगे, पोस्ट और 1000 करोड़ फालतू लगाएंगे, फिर कहते हैं हम कर्ज ले लेंगे। दिल्ली की अकेली सरकार है देश के अंदर, अकेली सरकार देश के अंदर, अकेली सरकार है जिसने कोई कर्ज नहीं लिया पिछले 5 साल 7 साल से। अकेली सरकार है जो बिना किसी कर्ज के चल रही है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, पूरे 7 साल हो गए हैं। अकेली सरकार है। You wanted to respond to that. See, from where he is getting figures, I don't know, but I'll He go. has given his own figures. I will show you documents. First of all, let me share a document with you, which is other than a bill of a domestic consumer. This is like how we have small gadas here in Goa. They are called commercial customers. Sorry, in them they call them NDLT, non-domestic low tension consumer.
Now this particular consumer has consumed 37 units in his Gada in Delhi. I've got a bill with me. Now his bill is what? How much is his bill? It is 941 rupees for consuming 37 units. What are the charges? 8% surcharge, pension trust surcharge, FPPC, PPCA charges and all those. So 37 units he is paying 941. No, but he says that This is what? you are not actually paying that. We are actually coming back to the same point. He says Who is not paying? that domestic customer is not paying. So No, correct. So that, what I'm trying to the government say, is paying on his behalf, No. and he has made one allegation which you have missed. He says that they have built a flyover much in advance, Yeah. so that money is saved, and they are pushing that money back into the people's they houses have- through this scheme. I will show you a report where they have got loans to the thousands of crores. I will just show it to you. 1 minute. See, if he is saying in Delhi, what is this? Delhi Jal Board has to repay 20,000 crores. CAG report says. What is this? From where is this money? This is not money from the Delhi government. नीलेश He जी is trying to show. No, आप मन डिस्टर्ब नहीं किया. This is a fact. This is one point. The second point I will show you. He is saying that he is not taking money from anybody. I will show you with proof. He is talking in here. I will show you with proof that the money taken by I just showed it to you. And the second thing, where he has taken money from, if you go to their entire budget of 67,000 crores, they are showing repayment and loans of this almost to the tune of 5,000 crores per year. So where the question? So are you fearing bankruptcy if this scheme is implemented? Secondly, what has happened is they are not doing what a normal DISCOM has to do, generation DISCOM has to do. They are not taking their assets into consideration. And every time a DISCOM asks for tariff revision, it is just pushed forward. And today, I can tell you that they have got agreements till 2027. 2027. The DISCOMs are unable to increase the tariffs because, why? Because they are not giving, their electricity board which is there, is not giving them the increase. Down the line, in 2027, they will go to arbitration and collect all the amount, and it will go to crores of rupees. As of today, there is 28,600 crores which is owned by them. Okay, so this might lead to एक bankruptcy सेकंड मैं according बता to. देता हूँ. अभी बड़ा आश्चर्य की बात है नीलेश बाब जी, अब डिस्कॉम्स की तरफ से प्राइवेट कंपनियों की तरफ से तरफदारी कर रहे हैं, जनता की नहीं कर रहे. No, he's अरे just tariff- putting up the figures. अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, फिगर नहीं, He's just ये putting up a figure of नो how दैट इज नॉट ए फिगर. tariff has not been revised. टैरिफ रिवाइज हम नहीं करते. टैरिफ को रिवाइज करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसका नाम है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी. वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वो करती है, मेरे हाथ में तो है ही नहीं. अगर उसने ठीक उसके सामने फिगर्स और फैक्ट्स ठीक से रखे गए, उसने कर दिया. और अब ये प्राइवेट कंपनीज के लिए, मुझे लगता है गोवा में भी प्राइवेट कंपनीज का काम करते रह गए, जनता का काम नहीं किया, इसलिए इनको जनता की चिंता नहीं है, प्राइवेट कंपनियों की चिंता है. अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट है. CAG रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर लास्ट 5 ईयर से किसी तरह का भी कोई, हमेशा सरप्लस में सरकार चली है, बजट सरप्लस में रहा है. ये CAG की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, इसको आप चेक करा लीजिएगा. Okay, so they are saying they are running surplus revenue and they are not running into losses the way you have been projecting. What is it? I will show you. Now, what is this? Now, They what is this? they are coming up with this CAG report. Delhi government maintained revenue surplus plus 5 years. Yes, CAG report. So this Jal board is part of the government system. So they एक take. second. That's what I'm trying to say. अगर मैं इसका जवाब दे सकता हूं. You you take left Jal from. board. See, ultimately, water is supplied by Jal board, and if water is given free, from where the Jal board is given? So this is one of the examples. Secondly, I will show you from their perspective. This is their election manifesto of 2015. What is there? You will see the number of promises which is made. I'll just remove the electrical tariff. They have changed from the manifesto 3 times what they have given right now. I'm not saying they're not giving. They're giving by whose cost? And what is the rates of tariff? The tariff rates for domestic consumers in Goa and the commercial consumers is a very fast difference. So what he's saying, that means you give somebody free and you take from somebody else. How it is possible? With them, and again, I'm coming to the same point. They are saying that they are not they are having a fiscal prudence so that the money is not spent on unnecessary things, and they push back the same money for people through these kind of schemes. But they have taken loans, no?
See, he has made a statement that he is not. Jal board is another thing. No, Jal board, no, the entire government let me is paying respond. back. Let me Yeah, respond. let him respond. पहली बात तो मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर 7 साल से 7 इयर्स दिल्ली में 7 साल से टैरिफ बढ़े नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि गोवा में भी अगले 5 साल तक, जो उनको चिंता हो रही है ना, अगले 5 साल तक किसी भी चीज के रेट नहीं बढ़ेंगे। 300 यूनिट फ्री होंगी, किसानों के लिए बिजली फ्री होगी, बाकियों के रेट 5 साल तक नहीं बढ़ेंगे। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं। एक दूसरी चीज कह रहे हैं नीलेश बाबू जी, उनका कहना है कि उन्होंने वादा कुछ और किया था 2015 में और उसके बाद कर कुछ और दिया। हाँ, हमने वादा किया था हम 400 यूनिट का आधा रेट करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 400 यूनिट बिजली का आधा रेट करेंगे और वो 24 घंटे के अंदर कर दिया था। उसके बाद 200 यूनिट फ्री भी कर दिया, वो तो एक्स्ट्रा किया ना। हमने वादा पूरा नहीं किया, वादे से भी ज्यादा किया। अभी हम आपसे वादा कर रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे वो बाद में पता लगेगा। ये तो अकेली सरकार है, केजरीवाल की जो सरकार है, जो जो वादे किए सारे पूरे किए, और वो कह रहे जो वादा किया उससे ज्यादा क्यों कर दिया। हाँ जी, ज्यादा किया, वो गलती हो गई। वो गलती कहाँ ज्यादा हो गए, कहाँ ज्यादा कर दिए। See, that is what I am trying to say. Now, I will tell you what are the receipts. There are 2020-21 total budget estimated is around 60,700 crores. In the budget itself, they are showing borrowings of 4,291 crores, other receipts of 1,100 crores. Now, he is saying that states own tax, states own non-tax, grants from center, which is almost 10,409 crores. He is saying he is not getting money from anybody. 10,409 crores is from the grants from the center. And he is from borrowings, he is declaring in his budget 4,291 crores. Is a proof? अच्छा, I don't know from what he is talking. ऐसा करते हैं, मुझे लगता है आज पेपर तो था फिजिक्स का और नीलेश बाबू जी हिस्ट्री की तैयारी करके आ गए। No, what he is saying is that you are borrowing. Let me interrupt. He is saying that you are borrowing money मैं बता रहा हूं ना। to fund such schemes, and that will happen in Goa, and eventually we will end up into a sort of Not at all. bankruptcy. देश के अंदर सिर्फ अकेली सरकार है जिसका बजट पॉजिटिव में है। पॉजिटिव बजट का अरे वो मतलब क्या दिखाने के लिए है? पॉजिटिव रहे। Actually, अरे this is सीएजी सीएजी अगर ऑडिट कर रहा है, This is not CAG. This is as per their budget statement in their सीएजी ने assembly. लिख के दिया है 5 साल से हम पॉजिटिव में चल रहे हैं, हम प्लस में चल रहे हैं। He is trying to deviate from what I am telling him. I am asking him his budget. He is 60,000 where he has also Do mentioned. you refuse this? No, I will show you more. I will show you more. दिखा दीजिए। Where he shows that I will show you his expenditure on the budget. Why he is going to spend on what? He has kept a provision of 2,820 crores has been allotted for providing power subsidy to consumers to DISCOMs. This is his budget. Okay, we will give हाँ, this, ये- but now let me दिखाइए, come दिखाइए। back to Goa, because अभी मैं ये this is इसका sir, जवाब I will देता come back to you. This is about Goa. I have not gone to He has- health yet. he- They boast of big health problem and No, but let's get I'm just- into power debate right power. now. That's okay, yeah. They have said that they will not increase the tariff of electricity in Goa for next 7 years, 5 years 5 What? years, if they get elected. Are you also promising the same thing to Goans? We have not increased. They are not going to increase. We have not increased tariff for last so many years. We are also giving subsidy, almost more than, see, I will show you the percentage of wise of subsidy. We are giving much more than what they are giving. They are 2,820 crores, what they have kept is for a budget for total consumers, which is less than us. I mean, our consumers less than theirs. And they are percentage wise, whatever subsidies they are giving, we are crossing that because we are already giving more than 500 crores subsidies across the section of the society as per JRC tariff. The second thing what is happening is, they are not allowing, he may say that JRC, for us it is JRC, for them is a Delhi-based Joint Agriculture Commission. There are reports that DISCOMs themselves are saying that they are not allowing to increase tariff and we are not able to pay. He's saying we are doing it in favor of people, and why you should object, why you are supporting private companies. To take loans and pay back, that's what I have showed you now here. To take loans and pay back this 2,887 crores what they have showed, 2,820 crores what they have shown as allocated providing powers. You take loans, you are taking loans of 4,500 You are crores. acting like an auditor and not like a proper minister
who's supposed to give you mean to say- electricity to the people, and what they have here. The question is, one, you have said ki we cannot give free I said electricity. we cannot give. The way they are giving, we cannot give because we are bothered about the state. We cannot be a debt state over a period of time. Okay. We cannot be Secondly, a debt state. See, we don't produce generation. We don't generate. Now he says he is not generating, which I don't think so, because there are things where I have where there are Gencos which are there, which they owe the distribution company, not they, because there what is happening? They have 3 or 4 distribution companies. In Goa, we only distribute our own electricity, and that is why any company will look at profits, which they are paying for them. He is saying the other way around. Actually, they are paying for them from the taxpayers' money by giving it to companies privately, because no private company without profits and without everything will work. yeah, this is Delhi. Yeah, This is Delhi. that's Oh, okay, something. now- He said so. now- He said so that people's money we are using properly. So I am just giving an example in electricity itself. So my question is very simple, sir. Tell me, yeah. Do you don't have faith in their assurance that they can make this in Goa, or you feel that if they make this, Goa will be bankrupt? Of course. What? I have just shown you, no, Of course, is what you don't have faith, or Goa will be bankrupt. By taking loans and giving free, we can also as a government go on taking loans and give free. Okay. Like, This, you have to answer this question very specifically बिल्कुल। because people. पहला ना मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे उनको अभी 5 मिनट दिए आपने, मुझे आधा मिनट दे देना, मैं पूरा बोल लूं। वो बीच में बोलने लगते हैं तो बात खत्म हो जाती है। अभी उन्होंने देखो कितनी बड़ी बात बताई कि गोवा की पावर मिनिस्ट्री दिल्ली से भी ज्यादा सब्सिडी दे रही है, पर दे किसको रही है ये नहीं पता लग रहा। जनता को तो बिजली फ्री नहीं मिल रही। हम लोग दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, 2,500 करोड़ की सब्सिडी देते हैं। उन्होंने बताया पता नहीं कितने 100 करोड़, अभी मैं समझ नहीं पाया कितना बताया उन्होंने। परसेंटेज टर्म में उनकी हमारे से बहुत ज्यादा है। दिल्ली की परसेंटेज टर्म में 2-3% बनती है, ये परसेंटेज टर्म में 10% पता नहीं कितना परसेंट बता रहे हैं। अगर गोवा की सरकार ज्यादा सब्सिडी दे रही है तो जनता को क्यों नहीं मिल रही? यही तो हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स के पास चली जाती है, ठेकेदारों के पास चली जाती है, कंपनियों के पास चली जाती है, जनता के पास नहीं जाती। हम ये कह रहे हैं जनता को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दो सब चीजें। Can I interrupt? He says that our tariff, Goa's tariff, is much lesser than Delhi tariff, and hence this subsidy is pushed through this tariff by lowering the tariff. Correct. देखिएगा दिल्ली के अंदर मैंने बताया ना, जब हमारी सरकार बनी 7 साल पहले दिल्ली सरकार बनी, 7 साल में तो टैरिफ नहीं बढ़ा ना। 7 साल से टैरिफ नहीं बढ़ा है। No, we are on this point, sir. दूसरा, अब गोवा में भी कह रहे हैं टैरिफ भी नहीं बढ़ेगा, हम बिजली भी फ्री देंगे, हम दोनों काम करेंगे ना। वो तो बोल रहे हैं कि हमने टैरिफ कभी बढ़ाया नहीं अभी इतने सालों से। कभी नहीं बढ़ाया तो फिर इतना कैसे पहुंच आप गया? आगे भी नहीं हमने आगे की गारंटी ले रहे हैं। देखो पीछे हमारी सरकार नहीं थी, आगे मेरी सरकार आएगी, मैं गारंटी आगे की ले सकता हूँ, पीछे की तो नहीं ले सकता। देखो मैं 2 चीजों की गारंटी लेता हूँ, 5 साल तक टैरिफ नहीं बढ़ेगा और कोई एमएलए खरीदेंगे नहीं, उसमें पैसा खर्च नहीं करेंगे। when Arvind Kejriwal came here, there were 2 announcements. One is free electricity, another is uninterrupted, and third important is उन्होंने बोला कि जितने भी बिल रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के हम माफ कर देंगे। देखो जितने लोग हैं उनके बहुत सारे गलत बिल आए हुए हैं, बहुत परेशान है। मैं कल से आया हुआ हूँ, कई लोगों से मैं मिला, कहते हैं उनके पेंडिंग बिल बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो गलत बिल थे। तो जैसा केजरीवाल साहब ने कहा है कि जितने भी बिल हैं सारे के सारे बिल, पेंडिंग बिल डोमेस्टिक लोगों के सबके माफ कर दिए जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। 24 घंटे बिजली आएगी, इस बात की गारंटी है। 300 यूनिट सबको फ्री मिलेगी, इस बात की गारंटी है। और फार्मर्स को बिजली फ्री मिलेगी, इस बात की गारंटी है। तो माफ 24 कर घंटे। देंगे। Are you also promising such things? See, I've already People made are it a also point. saying lot of bill has increased. No, Electricity see, bills we have not increased. increased the tariffs at all. The question of increase is consumption. So if the tariff is increased, you show, that is one. Yesterday, in Kuchore, there was a statement made on an electricity bill. And I think your press people only have pointed out what is the gafala they were trying to do. They were minusing the names of the people, blackening and showing a bill. When they asked that lady, when she gave a press statement that the bills are inflated, they asked to show us what is there, where it is. She could not explain. See, this is a hearsay of saying that the bills are inflated. Bills are not never inflated. Are Bills you expected. assuring like them that you will waive off the bills? Question of waiving of the bills is one part of it. Waiving of the bills, we have come with a scheme. See, I am paying my bills regularly. Like me, out of my consumers, 65% of the consumers to almost 70% of the consumers are paying in time. 15 or 20% of consumers are not paying in time. We have already come with a scheme where we have waived off the interest and pay only the principal So amount. at this point We of have already time, come. The question today has if not we come. waive off all the bills, what would be the loss to the state? Look,
hardly anything. See, waiving off, see, is the principle of government, the principles and ethics of a particular government. Now, waiving off, I will say why, then I will also stop paying my bills because they are going to waive off. That is not the question. Waiving off somebody's money is not the answer to your problems. Problem says, okay, we have waived off the interest so that you pay the principal. Now, if we want to waive off it, hardly now with the recovery what has been done, the outstanding must be hardly 200 or 250 crores. And from that, domestic consumer must be hardly 20 or 15 or 20 crores. So it is not a big thing for us to waive. So why you are not But promising principally, that? no, we can't. See, principally there are two things. A consumer who is paying on time, consumer who is paying in time, he will always say, I am paying on time, and this government has waived off somebody's bills who has not paid on time. It is not correct principally. And we Okay, will not do that. I'll get back to it. What he says is also correct. I have been paying my bill regularly, and I go to see my neighbor who has not paid the bill. He's waiting for your government to come in power so that his bill is waived off. देखिए इसमें इशू ये है कि काफ़ी सारे लोगों के बिल गलत आए हुए हैं। Yeah. बिलों की शिकायत है कि और बिल इन्फ्लेटेड था, ज़्यादा था, उसका गलत बिल आया, उसको ठीक नहीं हो रहा है। एमएलए के चक्कर लगाओ, मंत्री जी के घर के बाहर खड़े रहो, तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने कभी वन टाइम, दिस विल बी ए वन टाइम सेटलमेंट, के जितने भी पुराने बिल हैं उनको सेटल कर दिया जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट इज जीरो। वन टाइम सेटलमेंट तो उन्होंने भी ऑफर किया। नहीं, वन टाइम जीरो कर दें। कितना बता रहे हैं? 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ पे क्या लड़ाई झगड़ा करना है? अगर कोई बिजनेस भी करता है तो कहते हैं यार पहले हिसाब क्लियर कर लो, अच्छा रहेगा। आगे तो 300 फ्री कर ही रहे हैं, वरना उसके ऊपर क्या होगा? आपने 300 यूनिट फ्री कर दिया, पुराना चलता रहेगा बिल के अंदर, तो पुराना भी जीरो कर देंगे। और देखो हमने तो बिल्कुल साफ रखा है, जनता का ही तो पैसा है और जनता नहीं करना है। और 20 करोड़ से वैल्यू क्या होती है? 20 करोड़ में तो एक एमएलए भी नहीं मिलता। Every time he is talking about MLA, he wants me to out. He wants me to say something about. He wants to discuss about it. Okay. No, Okay, he is deviating from the subject. मैंने एमएलए को बोला, आपको नहीं बोला। अरे हम भी एमएलए, आप एमएलए दिल्ली करेगा, हम गोवा के एमएलए है। देखो दिल्ली का बता देता हूं मैं आपको। ओके ओके। नहीं, आप दिल्ली का एमएलए रहेगा, हम गोवा के एमएलए। 2014 में आप गोवा का नाम लेता है, एमएलए का नाम लेता है, तो मैं एमएलए का गोवा का हूँ। आप दिल्ली का एमएलए पैसा लेते होगे, पता नहीं, हम लेते नहीं। एक सेकंड दीजिए बस, एक मिनट एमएलए के कानून, एक मिनट बस। दिल्ली के अंदर जब हमारी पहली बारी सरकार बनी थी 2014 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया। 1 साल का टाइम था। हमारे पास 28 एमएलए थे, 28 एमएलए। बीजेपी के पास थे 32। हमारे से 4 एमएलए ज्यादा थे। उनको सिर्फ 4 एमएलए चाहिए थे, 4। 1 साल पूरी जान लगा ली उन्होंने। आम आदमी पार्टी का 1 एमएलए नहीं खरीद पाए। This is आप कांग्रेस के साथ, this is not political debate. This is ये- governance. Let me say this is governance debate, sir. So we are not talking. For this, we'll come back again with another ठीक है। debate that will be political debate. So right, a straight question to you. Your allegation on Aam Aadmi Party is that you all are doing all these things so that people who have got second homes in Goa should benefit because they have something like 80 units of electricity. देखिएगा ये पूरा का पूरा ना, मैंने गोवा के कितने कंज्यूमर्स हैं, किसको कितना फायदा मिलेगा, 100 यूनिट्स तक, फिर 200 यूनिट तक, फिर 300 यूनिट तक, टोटल मिला के 87%। गोवा के 87%, गोवा के टोटल जितने कंज्यूमर्स हैं उसका 87% लोग 300 यूनिट के अंदर आएगा। तो 87% जो लोग हैं वो गोवा के ही हैं। कल मैं आपकी असेंबली में था, नीलेश बाबू जी, कोरचौम में था, तो वहां पर था। लोगों से पूछा कि भाई आप आस पड़ोस में रहते हैं? कहते हैं हाँ जी, कुरचोरम में। कुरचोरम। आपका 4 मंजिल का बहुत बड़ा मकान था, मैंने देखा था, उसके पड़ोसी थे सारे, बहुत बड़ा मकान। बड़ा सुंदर था। आप जो कहा थे मकान में बहुत बड़ा था, आप उसके ऑपोजिट में फ्लैट में रहता है, डबल बेडरूम फ्लैट में। तो अब गलत उसके अंदर- गलत नहीं, आपका जो आदमी जो आपका मैंने आदमी उनसे मीटिंग पूछा, में किया था, मैंने मैंने उनसे एकदम पूछा- बिल्डिंग के सामने था, उसका बहुत बड़ा मकान था और मैं रहता हूँ फ्लैट में उसके ऑपोजिट। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? सबने कहा भी मैं इधर रहता हूँ। मैंने पूछा कितना बिल आता है? मुझे एक भी नहीं मिला जिसका 300 से ऊपर आता हो। सब गोवा के रहने वाले थे, आपके पड़ोसी थे। अपने पड़ोसियों से पता कर लेना, उनका 300 से कम आता है नहीं। 87% गोवा का अगर फ्री आ रहा है तो तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या 87 है? is right figure. See, I'm telling you, no, what is happening, I'll explain to you. First, before he could go, because I did not answer the first thing, I will explain to you what he means by subsidy, and he's saying about some nonsense MLA. I don't want to talk on that. I will just give you a small example. Delhi's annual revenue requirement, ARR, is for buying electricity is 20,481 crores. Goa's annual requirement is 2,327. In that, their budgetary support for subsidies, what they give, is 2,975 crores.
So percentage wise, it becomes 15% of their entire budget. As far as Goa is concerned, when we are giving budgetary support to everybody, he is saying we are not giving free. We are giving to every section of society support. And if you see, because we are consumption, because we consume only 2,327 crores. So that is why we give 437 crores we have given last year. This year we are going to give 504 crores. If you see percentage wise to their budget, ours is 22% subsidy. So he might be giving to some people and trying to make them at a vote bank. Our policy is not to make a vote bank. Our policy is to allow everybody in the entire But his section. doubt is that you are giving subsidy, but whom you are giving the subsidy? Directly, no, like how he is giving directly, we are also giving directly. There is no question of any contractor in between. It is directly. For them, there is a contractor. Discom is there. For us, it is directly we buy from the system, and that is how we give. So budgetary support is by way of units per unit support to the percentage of paisa per unit support. So I said percentage. So let's come to this figure of 87%. Is it true that if Aam Aadmi Party comes to power and they give this free electricity up to 300 units, at least 87% of the people, means 87 out of 100 people will benefit? See, I have been making statements in the past also. No, you have a record. You are. Yeah, I have record. I have made. See, the Goa government believes in giving the downtrodden, in a sense, people who are deserving, who deserve, in a sense, because of their economical backward class of people. And they are, because of the limitations of their budget. Now, I had made a statement, I am making it again. What he is saying, 87% from where he gets, I don't know. So what is your figure, please? No, see, that's what I'm trying to say. No, the percentage, if you go to see percentage-wise of the consumers which are there, of electricity consumers, now there are various types of consumers. As I told you, people have got second, third, fourth, fifth. Now they are not consumers, no. So you have to interpret what is a consumer. Consumer is, he stays 365 days here, he stays 24 hours or whatever, 8 hours, 10 hours, he's out of his house and comes back at the house to stay at night, is I consider as a consumer. A consumer cannot be outside staying in some other place. I cannot call him a consumer. You are talking about second home. I'm talking about flexi. Last time also I told you in my own self. Like I stay where he said that bungalow kisi ka hai, or I stay in a flat. And I've got another flat. No, I've got another flat. 4th floor bungalow is not yours. No, 4th floor bungalow is not mine. I stay on the 4th floor. So then what I'm saying is, same way, if this, I've got another flat which is there outside my state. I consume, that flat consumes only 65 to 80 units per month. So I'll also get free. So our thing is the way of his consumer, how he wants to protect his consumer and give free. Now, what is his consumer? We want to give deserving consumers free. No, but he is saying what is, you ask around your neighborhood and they will also agree that their electricity bill will be free. They will be happy. I think that should also be your election manifesto, at least in Kurcharam. The question of election manifesto does not arise, because see, if it's a manifesto like I showed you, their manifesto is so many pages. That way we are giving a lot of free. See, they are giving for our rates. So I have told you what are our rates: 127 rupees, 230 rupees. Our maximum goes to 600 rupees as per what it is. We are already giving to the deserving people where it goes directly to their accounts. What we are giving, direct benefit transfer to them, and they decide what to pay first, whether to pay the electricity bill first or whether they want other needs first, which they don't do. Okay, priority. Can I respond? Priority can be electricity, Can I or respond? priority can be other things. कैन भाई रेस्पॉन्ड? नीलेश बाप जी ने ना अभी बहुत क्लियरली कहा है कि गोवा के लोग 300 यूनिट से कम यूज नहीं करते. मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं, जितने भी लोग 300 यूनिट से कम कंज्यूमर से अपना बिल निकाल लीजिएगा. गोवा के रहने वाले लोग जो 12 महीने गोवा में रहते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं. इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग रहते हैं, कोरचोरम में जो रहते हैं, वो भी अपना बिल निकाल के देख लें. जिनका भी बिल 300 यूनिट से कम आता है, इनको वोट मत देना, इस बार आम आदमी पार्टी को दे देना. इनको लगता है कि 300 यूनिट से कम तो किसी का बिल आता ही नहीं है. हम कह रहे हैं 87% का आता है, सबका ही आता है. No, he says, तो सारे हमें दे देना. he says priority. प्रायोरिटी बता देना. Electricity is a priority or other things are priority. देखिएगा, प्रायोरिटी सारी प्रायोरिटी है ना. अगर हमने कहा कि मंत्री को 5000 यूनिट फ्री मिलती है, ये कह रहे मैं लेता ही नहीं क्योंकि ये काफी बड़े आदमी है. हो सकता है इनके दूसरे साथी लेते होंगे. मंत्री को 5000 यूनिट फ्री मिलती है, तो जनता को 300 यूनिट क्यों नहीं मिल सकती? He is still beating on the bush. No, that has been clarified. He says that only in government accommodations, government given accommodations. ये गलत बोल रहे हैं. इन्हीं का नोटिफिकेशन है, इन्हीं का नोटिफिकेशन, मेरा नोटिफिकेशन नहीं है. No, this notification is only residence includes staff quarters in other buildings, apartments thereto and garden thereto. It's exclusively set apart from a use of office.
एज ए रेजिडेंस। हाँ, तो 5,000 यूनिट मिलता है ना, तो मैं तो 300 की बात कर रहा हूँ भाई। मैं 5,000 नहीं दे रहा जनता को 300 यूनिट दे रहा हूँ। अगर मंत्री को 5,000 मिलता है तो उसको 300 मिल जाएगी, क्या दिक्कत never है? in units. So, okay, no, It no, is never no. in units. It is entire bill is paid by the government in the अच्छा, government tender. entire. It is not 5,000 unit, and that is also in government accommodation. That's what he is trying to say. इसका But he मतलब is और भी trying ज्यादा, to- he is और भी trying to ज्यादा। show Okay, 5,000 so units. last, No, last, he is trying to show units, which is not correct. As we end the debate, I have a straight question to you first, sir, saying that you're talking about these freebies, starting with electricity, and you said, your CM said that this is पहली guarantee. So there are, I think, more guarantees coming. पहली means Definitely. दूसरी तीसरी आएगी. Have you studied the economic model of Goa when you promise such things? Is it possible for Goa when we are actually not having resources like mining and tourism is going down? We are actually going through crisis. Is it possible? And please don't say about this MLAs buying selling because नहीं, अब that लोगों को doesn't पता go लग from गया कि government बाई funding सेलिंग की only बात to ना capital. करें तो भी लोगों को पता लग गया है। सेलिंग होती है, बाइंग भी होती है। एमएलए नहीं बोलूंगा मैं, बाइंग सेलिंग बोलूंगा। अच्छा, but have you studied the हाँ, बता economic देता model हूँ। of it? देखो, मैं बता दूं, दिल्ली का जो बजट है ना, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। जो पर कैपिटा बजट है, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति कितना बजट है दिल्ली का, वो है 30,000 रुपया। एक आदमी के ऊपर जो बजट है वो 30,000 रुपया है। गोवा का बजट प्रति व्यक्ति 1,40,000 रुपया है। 1,40,000, 30,000 का 35,000 नहीं है, 30,000 का 40,000 नहीं है, 50,000 भी नहीं है, 1,40,000 है। गोवा का बजट है 21,000 के आसपास, दिल्ली का बजट है 60,000 के आसपास, करोड़ के अंदर। प्रति व्यक्ति बजट 5 गुना। अगर दिल्ली में 5 गुना कम बजट है और हम इतना कुछ फ्री दे सकते हैं, तो यहां पे क्यों नहीं दे सकते? ये तो इनकी नीयत की बात है, साफ कह रहे हैं लोग। कहते नहीं, ये तो पॉलिसी डिसीजन, बीच में मत बोलिए, पॉलिसी डिसीजन है कि हम जनता को नहीं देंगे, हम जनता को नहीं देंगे, हम खरीद बेच करेंगे। मैं एमएलए नहीं बोलूंगा, खरीदना बेचना करेंगे। अरे जनता को दो ना, खरीद बेच के क्या करोगे? और कुछ करना ही नहीं है। अरे जनता देख रही है, जनता को क्यों नहीं देंगे? जनता का हक बनता है इस देश के अंदर। मैं बताना चाहता हूं आपको, इनको तकलीफ क्या है। अगर ये गारंटी अरविंद केजरीवाल की जगह कांग्रेस ने दी होती, अगर कांग्रेस ने ये गारंटी दी होती ना, ये मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही है। ये कहते हैं हम वोट बैंक नहीं बना रहे, वोट बैंक बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा एमएलए ले लेते हैं इधर से उधर। इनको वोट बैंक की जरूरत क्या है? वोट बैंक तो हमें चाहिए ना, हमें जनता के लिए चाहिए, हमें जनता के पास जाना है, हमें जनता को वोट लेना है। इनको वोट की जरूरत नहीं है, ये तो एमएलए ले लेंगे डायरेक्ट। अगर यही चैलेंज कांग्रेस ने किया होता, ये बहस नहीं कर रहे होते, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। आज इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने कहा है, और इनको पता है जो केजरीवाल ने कहा है, केजरीवाल करके दिखाएगा। He says that per capita budget of Goa is much higher than the Delhi, but still they can do it, and we can't do that. No, see, what he is saying is because of the population, correct? If you go, I've got another statement with me where their GST collection is there, of their total revenue, what is there, of their total revenue, which they put in the form of budget is 65,000 crores of 2021. In that, if you go to see, the revenue of collecting of GST is more than 45% of the budget. So that is why, because every state capital, that is because they are fortunate to have a state capital, and they are a union territory. I have showed you also figures that 10,429 crores is given by the center to them, which we do not get in our budget. Directly 10,429 crores they are getting. Okay, So for them what happens is, what he is trying to perform, that we are getting, see, we as a state have to manage entire thing. Entire, including our police force, including our roads, including our lights, including everything has to be managed. Okay, I'll get a response from him because time is up. He says should you have no be intention. happy that we are spending away against the people. You have Now no giving free intention. means we are giving Giri Aadhar. There are a lot of other. There is Ladli Lakshmi. There are so many other schemes which they don't give. Okay, sir. Here he says that you get funding from the, in fact, grants from the central government, being union territory, and we state have to manage through our own funds. देखिएगा, मैं आपको बता दूं, गोवा को सेंट्रल फंड से सेंट्रल असिस्टेंस जो मिलती है 3,301 करोड़ रुपीस मिला, 3,301 करोड़ See, रुपए। he is confusing. He is confusing. See, he is talking about that also. Those are the schemes of the center where you get grants which they get. This is a direct Direct grant benefit to being them union- in their budget. We don't show in our budget. Let him show. I देखिएगा, will show them in सुन their लीजिए। budget. अरे, In 2021 budget I will show that they परेशान have क्यों हो रहे shown. हैं? परेशान क्यों हो रहे हैं? सुन परेशान लीजिएगा, सुन नहीं, आप लीजिए। गलत बोल रहे हैं इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। Okay, आप अरे, सही बोलो, परेशान क्यों हो रहा परेशानी हूँ? की बात नहीं है। अभी आप
काफी छोटे हैं मुझसे उम्र में, सुन लो उम्र छोटी है बड़े की होती नहीं अभी है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जो इसलिए आप बड़े हैं इसलिए बराबर बोलो, छोटा आदमी से छोटा हूँ इसलिए मैं आपको नहीं, करेक्ट कर रहा हूँ। जो नहीं सही बोल रहा है आपको करेक्ट कर रहा हूँ मैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार को 325 करोड़ रुपए की बजटरी सपोर्ट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। दिस इज द लोएस्ट इन इंडिया। किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को इतनी कम सपोर्ट नहीं मिलती है। हमारे से 10 गुना सपोर्ट गोवा को मिलती है। मैं कहता हूं इन सारी बहस को छोड़ देते हैं, इस चक्कर में भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अरे भाई 5 गुना बजट है, दुगना तो नहीं है। पर कैपिटा 5 गुना है ना। अगर एक आदमी, आप सोच के देखो, सिंपल समझाता हूं मैं आपको, एक आदमी 25,000 रुपये महीना कमाता है और दूसरा पड़ोस में 1,25,000 रुपये कमाता है, और 1,25,000 वाला कहे नहीं मैं तो बिजली का बल्ब नहीं जलाऊंगा, अंधेरे में बैठूंगा, ये क्या मतलब हुआ भाई? अगर 5 गुना ज्यादा इनकम है तो 5 गुना खर्च करने की हिम्मत होनी चाहिए। I have a time constraint. You want to answer for this? No, see, I have given my figures and facts. 23,800 is collected as state GST. This is the entire budget. Okay, so they have enough money to do all this. So last question, sir. Starting, I don't know where to start for both the parties. ये बार बार हो रहा है कि डिबेट किए जा रहे हैं, पावर डिबेट। ऐसे होता है कि आप जब चैलेंज नहीं करते तो वो चैलेंज करते हैं, वो जब चैलेंज नहीं करते आप चैलेंज करते हैं। इज इट दैट बोथ पार्टीज आर टुगेदर द वे इट लुक्स कि चलो डिबेट करते हैं, चलो लाइमलाइट में आते हैं? इसके लिए तो देखो मैं इनका धन्यवाद करूंगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू नीलेश बाब जी, इन्होंने मौका दिया कि जनता तक अपनी बात पहुंचा सके। एंड इससे देखो सभी को पता लग जाएगा असलियत क्या होने वाली है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैं आगे के लिए भी सेल्फ इन्विटेशन उनको देना चाहता हूं कि मुझे फिर से बुलाएं। अभी उन्होंने पानी की बात की थी, मैं जल मंत्री भी हूं। अभी मैं रुक जाता हूं, 1 घंटे बाद जल मंत्री से भी कर लेंगे, उनको भी बुला लीजिएगा, 4 बजे उनके साथ रख लेते हैं। और पॉलिटिक्स पे करना है तो उसके बाद किसी और मंत्री को बुला लें, उनसे पॉलिटिक्स पे भी कर लेंगे। इलेक्शन के टाइम पे करेंगे सर नहीं, मुझे लगता है अगर उन्होंने दूसरे मुद्दे उठाने हैं ना, बजट पे भी करना है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं अपने रेवेन्यू मिनिस्टर से जो है उनसे बात कर लेता हूँ, 1 घंटे का समय दीजिएगा, बजट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बजट पे भी कर लेते हैं। डिबेट्स अगेन, थैंक यू वेरी मच सर। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये परत इवन आस्किंग फॉर चैलेंज, आस्किंग फॉर डिबेट, एंड देन this doesn't happen with Congress. The way he has said, if Congress had to make this announcement, you would not have reacted. See, they formed the first government with Congress. He should not ask me. You ask him. He first formed government with Congress. There are equations, and I don't want to talk about those equations. The second thing is, I have never asked for a debate. His own people came here and started debating, and that time they got up after a slumber of after 8 months. When his first some MLA came and said debate, I said why should I? If the power minister comes, I'll debate. I have no problem in debating and telling the facts of what the figures are of the state of Goa. They took 8 months to get up from their slumber. I did not get up. I stayed there. I made my statement. The moment he said, I'm coming, I said, okay, I have no problem. The question is, see, what is this debate about? This debate about is very simple. 2 lines, I'll finish it up. One is, nothing comes free in this world. We don't produce in Goa electricity by our own. But we give subsidy to people in solar to generate 50% subsidy to generate in their homes so that we don't have to buy. Automatically, when we don't have to buy, we don't have to give. That is one. Electricity is not generated in Goa by ourselves. Not a unit is generated by our. Solar people are not generating also. That's what your statements. People are not reacting to your statements. They have slowly gone up. It is from 0 in 3 years back. It has touched almost 20 megawatts, and over a period of time will touch more. That's okay. That is how we promote. But what I am trying to say, free means what? See, I made a statement last time also. Free, when you say, from where are you going to give free? Their tariffs, if you go to see, they are so high tariffs in Delhi. What is talking about? Giving 200 units free, and what about 12 rupees and 8 rupees and 6 rupees 50% tariffs? Our highest tariff is 4 rupees. So they are taking from somebody else, somebody who is paying and they are giving somebody else. This is what you sum up. Sir, last word from you. देखो, मैं इसको समअप ये करना चाहूंगा। पहली बात तो कि आज की जो बहस थी, जनता ने फैसला करना है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो 300 यूनिट फ्री नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गोवा की 87% जनता को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। दूसरा, ये जो पुराने पेंडिंग बिल्स हैं, जो डिस्प्यूटेड बिल्स हैं, उन सबको हम माफ कर देंगे। तीसरा, जब ये लोग अपने एसी कमरों में बैठे रहे होंगे, उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन गलियों में जाके ट्रांसफार्मर बदलवा रहे थे, बिजली की लाइनें डलवा रहे थे।
उसकी वजह से 24 घंटे बिजली आती है। मैं आपको गारंटी देता Wrong, again हूं कि wrong. गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली आएगी। अगले 3 साल मांग रहे हैं, 10 साल के बाद भी 3 साल मांग रहे हैं। हमने नहीं मांगे थे। आप कितने साल मांगेंगे इफ यू कम टू पावर? 2 साल के अंदर आपको 24 घंटे बिजली लाके दिखाएंगे। Discoms, see, he again is telling lies. अरे भाई We हमारे have to sum No, this. no, see, he is saying, see, Discoms are whom? He is not creating Discoms. Discoms were created before, and Discoms are spending money in distribution. Government is not spending money in distribution. He has to clarify if government is spending, from where he is spending. Okay, so I'll sum up the debate. Thank you very much, sir. Thank you. Delhi, Power Minister from Delhi. Thank you very much, sir, and also Nilesh Kabra, sir, for participating in this debate. So, finally, who wins, who loses, is for the people to decide. This entire debate we are holding just because there was a challenge, and this challenge was given from either side, and then finally when Nilesh Kabra said that he is ready to discuss with Power Minister from Delhi, Power Minister from Delhi actually flew down to Goa and this debate happened. So it is for all of us, especially all the Goans, to decide which party to vote, which party not to vote, which party to believe, which party not to believe. So I end this debate. Thank you very much.